Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we will going to study about Food Industrial Interview Training Program, another lecture that is preparation for program management commitment. So, this topic is very much important for students who all are preparing for interviews in food industry. Let's see the introduction part of the topic. A uniform way of thinking about food safety that is driven by the senior site management to all level within the site. This way of thinking is incorporated into the decisions that are made on the daily basis. Management commitment and food safety culture is shared belief with the key word being shared. Values don't just live in the individual, but rather in groups and the organization. There is no one size fit all solution. However, if management commitment to food safety is present, this shared belief will resonate throughout the organization. So in this lecture what we are talking about कि कोई भी एक फूड इंडस्ट्री है राइट तो वहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट do all the थिंग राइट जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है मैनेजमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अब सिंस ये एक फूड प्रोडक्ट है फूड इंडस्ट्री है तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं जो कि एक ह्यूमन कंजप्शन के लिए हैं राइट सो उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यू नीड different types of planning, you need different types of guidelines like GMP guidelines कि कैसे आप उस पर्टिकुलर फूड को सेव कर सकते हो कैसे फिट कर सकते हो फॉर कंजप्शंस राइट then management commitment in the food industry it is essential to the viability of the HACCP system that there is a top level senior management commitment. Without this the entire HACCP system can be crumbled within the food business. तो सिंस आपको पता है कि कोई भी फूड इंडस्ट्री वेदर इट्स अ बेवरेज इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री हर एक द बेसिक एम और यू कैन से द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच एनी फूड इंडस्ट्री वर्क इज द फूड सेफ्टी किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो फूड सेफ्टी है फूड की जो सेफ्टी है इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट राइट तो इस फूड की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सेफ्टी बॉडीज वन ऑफ इज हैसेप राइट तो हर एक सिस्टम के लिए अगर हम बात करते हैं हैसेप की वायबिलिटी के लिए तो जो एक टॉप लेवल सीनियर मैनेजमेंट कमेटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि वही एक कमेटी होगी जो पूरे को गाइडलाइन करेगी राइट पूरे को गाइड करेगी तो वो कमेटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अब उस कमेटी जो है अगर वो कमिटी नहीं होगी दैट इज़ अ टॉप लेवल सीनियर मैनेजमेंट कमिटी अगर कमिटमेंट नहीं होगा तो हैसेप का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्रैम्बल्ड हो जाएगा then the majority of customer standard and certification standards include BARC, BRAC, SQF, ISO 22000 have mandatory requirements around senior management commitment. These requirements include the provision of adequate resources, the implementation of effective communication, a system for management review, and mechanism for continual improvement. सो एक एक मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशंस जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें बार्क आता है ब्राक आता है एसक्यूएफ आता है आईएसओ आता है तो ये एक मैंडेटरी है किसी भी फूड इंडस्ट्री के लिए ये जो three bodies हैं even the GMPs also are very much important in safeguarding the product and making that product fit for consumption right so these requirement जो है ये include
क्या क्या करता है, ये जो तीन चार रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? द फर्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ एडुकेट रिसोर्सेज, the provision of educate resources, the first. Second is the implementation of effective communication. Fourth, third is a system for management review, and the last is mechanism for continual improvement, right? Now moving on, the effective communication. अब effective communication की अगर हम बात करें तो effective communications, under the heading of effective communication, it says the success of any food business is effective communication. Since communication is very much important whenever you are dealing in any industry, right? The HACCP food safety system should include clear communication and reporting channel between senior management and those responsible for implementing maintaining business system. तो एक कम्युनिकेशन जो होता है बहुत सारी चीज़ों को ठीक है ठीक कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक फूड इंडस्ट्री है, एक ये बहुत ही वास्ट सी इंडस्ट्री है, राइट? तो उसमें अगर एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, एक रिपोर्टिंग चैनल होगा बिटवीन सीनियर मैनेजमेंट और दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग बिजनेस सिस्टम, तो काफ़ी हद तक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक लेवल पे सॉल्व हो जाएंगी, इनिशियल लेवल पे। जब भी हमारे इनिशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राइट, तो कोई आगे प्रॉब्लम्स जनरेट और नहीं होती हैं, क्योंकि इनिशियली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, राइट? सो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में देखते हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉडी है कोई भी फूड बिजनेस के लिए। So, this may include supervisor, line staff, the quality assurance team, and the HACCP team. तो effective communication में supervisors include होते हैं, line staffs होते हैं, quality assurance teams होती है और HACCP teams होती हैं. Now moving to the review system. Again, the review system is again very much important. How? Every HACCP food safety system should be reviewed on a regular basis to demonstrate senior management committee commitment. This process should be driven by senior management and include at a minimum a review of food safety action plan, customer complaints, non-conforming product, resources requirement, process performance, and any internal or external audit result. Now, अब लेट्स सी रिव्यू सिस्टम में, जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ड्रिवन होता है बाय एनी सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, जब भी मैं बात कर रही हूँ सीनियर मैनेजमेंट, देन ठीक है, तो एक ये सीनियर मैनेजमेंट से ड्रिवन होता है। एट अ मिनिमम मीन्स इसमें आता है जैसे फूड सेफ्टी एक्शंस प्लान्स आ गए, कस्टमर की कंप्लेंट्स आ गई। रिव्यू मीन्स कि कस्टमर इज़ द मेन थिंग, राइट? कोई भी फूड इंडस्ट्री में जो कस्टमर होता है इट्स प्लेइंग द मेन रोल। तो उसमें क्या है कि क्या एक्शन प्लान्स होंगे, ठीक है, फूड सेफ्टी एक्शंस प्लान क्या क्या लेने। अगर कस्टमर का हमने रिव्यू लिया तो उसकी क्या कंप्लेंट्स हैं, नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, प्रोसेस परफॉर्मेंस, एंड एनी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट रिजल्ट्स। Then comes the continual improvement. It is the important that the food business recognizes that systems are continually changing before therefore making continuous improvement a necessity. Senior management commitment can be demonstrated to continuous improvement through the attendance and participation and in key businesses meetings related to food safety, HACCP, and quality. So there should be a continuous improvement in फूड इंडस्ट्री। कहीं पर भी आपको लगता है कि एक फूड इंडस्ट्री में यू ऑलवेज नीड अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में क्या हो रहा है कि कोई भी कंप्लेन है कस्टमर की,
related to food safety, related to the food product, related to packaging. So you should always try, right? One should always try, one should always try how to improve the quality of the food product. If you maintain the quality or improve the quality of the food product, तो जो business है food का, you get the hype, right? So there is a एक एक ये मतलब हमेशा it's always a necessity कि continuous improvement होना ज़रूरी है. Then comes the auditing management commitment. There are many ways that your business can demonstrate management commitment during a certification audits. Review the requirement of your certification standard is the best place to start. How there normally is a separate section dedicated to management commitment. However, the requirement may also be documented throughout the applicable certification standard as well. The food auditor will be assessing the involvement of senior management during the audit process in addition to their participation in the success of the HACCP food safety and quality system. The availability of the record to support the review process should be priority for any food business, right? So द अवेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड मतलब जब बात करते हैं कोई भी फूड का तो उसमें उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, राइट, जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं टू रिव्यू द प्रोसेस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट कमिटमेंट, ठीक है. अब मैनेजमेंट कमिटमेंट अगर हम इस रॉ डायग्राम से समझें तो क्या है. सो मैनेजमेंट कमिटमेंट में पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स द प्लान एंड द रिसोर्सेज. अब आप लोगों जब भी मैनेजमेंट कमेटी एक स्ट्रैटेजी बनाती, उस स्ट्रैटेजी पे उनकी क्या एक पॉलिसीज़ हैं जिन पॉलिसीज़ पे दे विल वर्क ऑन. देन there is certain a plan. According to the plan they will going to work. And the resources उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में what all what all thing or what all resources you need is again very much important, right? So ये सारी चीज़ें हो गई हमारे मैनेजमेंट कमिटमेंट में, राइट. देन कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस अथॉरिटीज़ में क्या है कि टाइम और ट्रेनिंग. देन आता है टीम एंड लीडर्स. मतलब कि टाइम और ट्रेनिंग इज़ अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देन कम्स टीम एंड टीम लीडर्स. अब यहाँ पर जनरली 2-3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि why is मैनेजमेंट, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, why is मैनेजमेंट कमिटमेंट इज इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो द बेसिक और द स्ट्रेट रीज़न इज कि इट हेल्प to assure that the QMS is well supported and maintained. मतलब कि ये पहले बताते हैं कि ये एश्योर करता है कि जो QMS है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत ही ज़्यादा वेल सपोर्टेड है और ये मेंटेन है, ठीक है. तो इसलिए हमारी मैनेजमेंट कमिटमेंट इज़ इम्पोर्टेंट. देन कम्स व्हाट इज़ द मैनेजमेंट कमिटमेंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन इसी में आता है कि कोई भी मैनेजमेंट कमिटमेंट है, राइट. द सेकंड क्वेश्चन कम्स, वन सेकेंड, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मैनेजमेंट
commitment and involvement. सो मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या करता है, एक मोटिवेटिंग फोर्स को प्रोवाइड करता है. व्हाट मैनेजमेंट कमिटमेंट इज डूइंग, सो दे आर डूइंग नथिंग बट providing a motivating force and resources for organizing and controlling activities within the organization. इसमें जैसे एम्प्लॉय का इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स दी मीन्स वर्कर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो प्रोवाइड करता है. सेकेंड आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कमिटमेंट. सेकेंड क्वेश्चन कम्स, what is the importance of commitment. इम्पोर्टेंस ऑफ कमिटमेंट क्या है. सो कमिटमेंट का द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज इट हेल्प्स यू टू स्टिक टू योर गोल्स ड्यूरिंग द फुल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अब आपका कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है तो कमिटमेंट क्या आता है, ये एक तरीके से दे हेल्प यू कि आप अपना जो आपका जो गोल सेट है, गोल क्या है, फूड की सेफ्टी, उस पे आप स्टिक रहो. सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट मे आस्क यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू. So, as far as what we have covered in this lecture, we have covered what is a management committee in food industry, then different types of communication. The first is effective communication, second is review system, then how continual improve why continual improvement is important, then how to audit management commitment. Then comes this raw diagram, and we have discussed the certain questions that may ask you during the interview. So student, hope you have understood the lecture, but before ending the lecture, one question I would like everyone to answer on the comment section below. The question is, you can note it down or you can take a screenshot. What are the what are the characteristics of commitment? I want everyone to answer this question. I want everyone to leave your answers in the comment section below. So I will going to answer each your questions. Okay, so I hope you have understood the lecture, students. If you have any queries, you can leave your queries in the comment section below. And you can also subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. This is our helpline number, that is 7080833450. You can call on this number for any queries. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.